Hello student, today we discuss about ellipse. An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points in a plane is constant. ellipse जो है वो set of all points in a plane और उसका डिस्टेंस जो होगा टू फिक्स पॉइंट से वो कांस्टेंट होगा. लेट अस टेक फिक्स पॉइंट एंड दैट इज अ सेकंड फिक्स पॉइंट, दैट इज f1 एंड दैट इज f2. तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास p1, इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से. अब हम सेकंड पॉइंट ले लेंगे, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है p2, उसी तरह हम एक पॉइंट और ले लेंगे p3. यहाँ पे p1 f1 प्लस p1 f2 इज इक्वल टू p2 f1 प्लस p2 f2 इक्वल टू p3 f1 प्लस p3 f2. that is the sum of distance from here to here and from here to here, and similarly from this point r is remain constant. so parabola like, तो हमारे पास जो पैराबोला की शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी. यहाँ से ढंग से नहीं बना है ये, सम ऑफ इनका जो सम ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आएंगे. इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum of distance is remain constant. so this is a plane, here a point f1 and here a second point f2. these are called foci of the सर्कल. यहाँ पर हमारे पास फोकस 2 है तो इसे क्या बोलेंगे हम, फोकाई ऑफ द सर्कल. नाउ वी टेक अ बाइसेक्टर and this is the center of parabola, and here point A, here point B, here point C and here point D, and this is called major axis and this is also a major axis. so this is a major axis, and this point O to C, this is called minor axis, and this is also a minor axis, so it's a minor axis. Major axis denoted by A, distance from this point to this point is A, and similarly from this point to this is A, and distance of minor axis, that is point B, and from here also this point is a B point. This implies that the length of major axis, that is A plus A, that is equal to 2A, and length of minor axis, that is B plus B, 2B, that is 2B. and this is a line segment AB passing through the foci F1 and F2 are called major axis, and this is the center, and the line segment which is passing through the center is called minor axis, and end point, that is end points, is called vertex, and this is also a vertex, that is endpoints of the major axis are called
vertices of the ellipse. यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स दो आ रहे हैं, अगर दो वर्टेक्स होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे वर्टिसेस। यहाँ पर फोकस हमारे पास क्या है, दो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकाई, एंड दीज आर कॉल्ड फोकस। इट इज फोकस। और ये हमारे पास दो हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, फोकाई ऑफ द एलिप्स। दैट इज F1, F2 are called foci of the ellipse. And from center to F1 is distance C, and from this focus to this center is also C. That is distance between the foci is 2C, and this is called semi-major axis, and this is called semi-minor axis, and total length of minor axis is 2B, and major axis की जो हमारे पास लेंथ होगी वो 2A होगी।